According to a 2020 report from the National Sample Survey Office, average education expenses nearly doubled over the previous decade. This shows कि education काफी expensive हो गई है. So, what can be done? Before we begin, don't forget to like, share and subscribe to be notified of new videos. For more such videos, click on the link in the description. With expenses like tuition fees, books, accommodation and travel adding up, education finance करना overwhelming लग सकता है. That's where an education loan comes into play. ये आपकी help कर सकता है in covering education costs, so you could focus on studying. You might only have to start repaying after graduation. आप tax benefits भी claim कर सकते हैं on the interest paid on education loan. There's no maximum capping. Whether you wish to study in India or abroad, there's a loan tailored to your needs. Let's take a look at some education loan options that are available. First up, domestic education loans, जो उन लोगों के लिए है who want to pursue their studies in India. ये loans generally tuition fees, books, living expenses etc. के लिए use हो सकते हैं. So, what's covered under such loans? First, they cater to various educational needs, including undergraduate and postgraduate programs, professional courses and vocational training. Second, कुछ loans specifically tailored होते हैं for students accepted to premier institutes जैसे IITs, IIMs, NITs, etc. Third, there are also options for short-term skill development programs like vocational or technical training. Fourth, government-sponsored education schemes भी होते हैं जो subsidies provide कर सकते हैं to students from economically weaker sections and minority communities. Fifth, अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ लोन्स इन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं. सिक्स्थ, ऐसे भी एजुकेशन लोन्स हैं जो प्रोविजन फॉर लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल असिस्टेंस. डोमेस्टिक एजुकेशन लोन्स सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर लोन अमाउंट एंड द लेंडर. सिक्योर्ड लोन्स में रिक्वायर कोलैटरल जैसे प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, while unsecured loans could be available for smaller amounts or students accepted into top tier institutions. Now, let's move to international education loans. ये loans उनके लिए designed है जो अपनी studies इंडिया के बाहर pursue करना चाहते हैं. These loans could take care of a wide range of expenses including tuition, travel and living cost. तो ये loan और क्या cover करते हैं? First, these loans address diverse academic needs including specialized courses and admissions to renowned global universities like Harvard, Oxford, Stanford, etc. Second, आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे हाउसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा कवर करने के लिए भी लोन्स मिल सकते हैं. थर्ड, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सब्सिडीज भी ऑफर कर सकते हैं. फोर्थ, आपको ब्रिज लोन भी मिल सकता है टू असिस्ट विद शॉर्ट टर्म कॉस्ट जैसे प्री एडमिशन और प्री वीजा एक्सपेंसेस. इंटरनेशनल एजुकेशन लोन्स सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. इनके टर्म्स और कंडीशंस टिपिकली स्ट्रिक्टर होते हैं. देयरफॉर आप लोन टर्म्स को केयरफुली इवैल्यूएट कर सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग विद एन एप्लीकेशन. There you have it. No matter where your academic journey takes you, there is an education loan designed to support your dreams. Stay tuned for more valuable insights on education loans. Until then, keep watching, keep learning.